Hello student, welcome to all. Today's our new topic is Corona. Now, in this chapter we study about what is Corona effect, factor affecting Corona, environmental facts and conditions regarding Corona effect, advantages of Corona, disadvantages of Corona, and reduced method of Corona effect. And also we study how we calculate the Corona effect in our transmission line. First of all, Corona discharge or the Corona effect is known as is an electrical discharge by ionization of fluid such as air surrounding conductor that is electrically charged. The corona effect will occur in high voltage system unless sufficient care is taken to limit the strength of surrounding electric field. Corona discharge can cause an audible hissing or cracking noise as it ionizes the air around the conductor. This is common in high voltage electrical power transmission line. The corona effect can also produce a violet glow, production of ozone gas around the conductor, radio interference, and electrical power losses. Now first we see what is corona effect. Now, what is corona effect? The corona effect occurs naturally due to the fact that air is not perfect insulator, which contain many free electrons and ions under the normal condition. When electric field is established, the air surrounding the conductor, there is some free ions, electrons in the air, and which experience a force. And due to this effect, the ions and free electrons get accelerated and move in the opposite direction. The charged particles during the motion collide with another and slow moving uncharged molecules. Thus, the number of charged particles increase rapidly. If the electric field is strong enough and dielectric breakdown of air will occur, the arc will form between these two conductors. Electrical power transmission deals with bulk transfer of electrical energy from generating station to our consumer station, or we can say our consumer. So there are many kilometers of transmission line are there. For this reason, the long distance transmission conductor are almost necessity of effective power transfer. So we have to reduce our losses across this system. So minimizing these energy losses has been a major challenge for our power engineers. The corona discharge can significantly reduce the efficiency of extra high voltage transmission line of power system. Mainly the two factors for the corona discharge are occurs. First one is alternating electrical potential difference must be supplied across the line, and also the spacing of conductor must be large enough to compare the line diameter. When the alternating current may flow across the two conductor of transmission line and whose spacing is large compared to the diameter, the air surrounding the conductor is subjected to dielectric stress. At low value of the supply voltage, nothing occurs as the stress is too small to ionize the air outside. But when the potential difference increases beyond the some threshold value, which we call critical dissipative voltage, the field strength becomes strong, and this field strength is enough for the air surrounding the conductor dissociate into ions and making it conductive. This critical dissipative voltage occurs at approximately 30 kV. The ionized air results in electrical discharge around the conductor, which is due to the flow of this ion. This gives rise to faint luminous glow along with hissing sound, accompanied by the liberation of ozone, and this phenomena of electric discharge occurring in high voltage transmission, which is known as corona effect. If the voltage across the line continue to increase, the glow and hissing noise becomes more and more intense, introducing a high power loss into the system. Now we study some factors which are affecting the corona losses. Now some factors are affecting the corona. First one is an atmosphere, conductor size, spacing between the conductors, supply voltage, and air density factor. The line voltage of the conductor, main determining factor of the corona discharge in transmission line, which is our supply voltage.
at the low value of voltage lesser than the critical distributive voltage, the stress on the air is not just high to cause dielectric breakdown. So there is no any electrical discharge are there. So the supply voltage are mainly first effect for the corona. If high voltage is there, there will be corona. Otherwise, no any discharge are there. With increasing the voltage, this corona effect in transmission line occurs due to ionization of atmospheric air surrounding the conductor. And it's mainly affected by condition of the cable as well as physical state of atmosphere. So mainly it depend on the air density factor. If there is a density of air must be higher, the corona effect must be higher. So there are supply voltage and air density factors which affect firstly for the factor of for the effect of corona. Now the other three is an atmosphere, conductor size or supply spacing between the conductors. Now first one we see the atmospheric condition. We have proved that the voltage gradient of dielectric breakdown of air is directly proportional to density of air. And in stormy day, due to the continuous airflow, the number of ions present surrounding the conductor is far more than normal condition. So what happened? There is the discharge of transmission line with low voltage are increasing in our stormy weather. Hence, it's more likely to have electrical discharge in transmission line on such days compared to day with very clear weather. And the system has to be designed consideration those extreme situations. So atmospheric conditions are more affect for the corona. Now the condition of conductor or our conductor side. The particular phenomena depends highly on the conductor and its physical condition. It has an inversely proportional relationship with the diameter of conductor. With increase in diameter, the effect of corona on power system reduced. If decrease in diameter, the effect of corona on power system increase. Also, the presence of dirt or roughness of the conductor reduce the critical breakdown voltage, which means that voltage for the producing corona are reduced. So, for if we choose a transmission line for, if we assume that a transmission line for 100 kV if corona occurs, but due to this dirtness, the corona are produced in for 90 kV voltage. So, making the conductor more prone to corona losses. Hence, in most cities, industry area have high pollution, and this factor is reasonable importance to counter the ill effect in our system. Now, the third one is spacing between the conductors. As we already mentioned that for corona occurs in the spacing between the lines. When two conductors has high voltage and between two conductors the corona are produced. So spacing between the conductor are more affect. So if the spacing between the conductor respect to our diameter compared very high, so if length get increased beyond the certain limit, the dielectric stress on the air reduce, and consequently the effect of corona is reduced as well. If the spacing made too large, then corona for the region of transmission line might not be occurred. So if we choose a spacing between the conductor is higher, which means that we reduce the corona. Now we see now some advantages of corona. First one is the diameter of the conductor is increased. As we know that when the corona effect are produced, what happens? The surrounding air are ionized, which means that surrounding air are act as a conductor. So the actual diameter of the conductor or cross section of the conductor is increased. Now the next one is the increased diameter reduce the electrostatic stress between the conductors. So as we know that if the diameter of conductor are increased, the electrostatic stress between the conductor are reduced. So if the conductor air is ionized, which means that the diameter of conductor or cross section of the conductor is increased, so reduce the electrical stress between the conductor. The corona effect reduce the effect of transient. As the in transient,
the short circuit current are produced and short circuit current are reduced with the help of reactance, leakage reactance. So, if the reactance value are increasing due to the corona effect, which means that the effect of transient will reduce. Some industry use the effect to remove unwanted violet organics from the atmosphere. Now we see some disadvantages regarding corona effect. The corona power loss reduce the efficiency of transmission line as uh, this effect are produce losses in transmission line, which means that the sending end to receiving end, our power transmission is reduced, which means that efficiency of transmission line is reduced. The corona effect produces ozone, which leads corrosion of the conductor. Voltage drop occurs in the line. Due to the corona, the drops are increasing, which means that the voltage regulation are reduced. The radio and TV interference occurs on the line because the line of radio and line are nearest to our power transmission line. So the radio and TV interference occurs on the line, and the corona effect can also damage the line insulation because in corona effect the voltage are increasing and the air surrounding are ionized, damage our insulation. Now the reducing method of corona effect. Reducing the corona by increasing the conductor spacing, by increasing conductor size, or using a bundle conductor. The first one is by increasing the conductor spacing. As we already mentioned that for corona to occur in spacing between the lines effectively should be much higher compared to its diameter. But if length get increased beyond a certain limit, the dielectric stress on the air reduced and consequently the effect of corona reduced. So if spacing made too large, then corona for the region of transmission line may not occur. So we have to increase conductor spacing in the reference of its diameter. If diameter of material is too small to its conductor spacing, then the corona will not introduce in our transmission line. The next one is increasing the conductor size. A bundle conductor increases the effective diameter of the conductor, hence reducing the corona effect by the help of bundle conductor. In this figure, we see the bundle conductor. The 4 bundle conductors are there, and there is a spacer between them, and this is the subconductor. So this and so the all over conductor area are increasing, which means that there is a less resistance and thus reduce the losses. Now by increasing conductor size, a ACSR conductor have large cross sectional area and are used to reduce corona effect in a transmission line. The ACSR conductor is an aluminum conductor steel reinforced cable. So there is in a center there is a steel reinforced and all over the conductors are aluminum conductors, and this whole conductor has large cross sectional area, which means that reducing the conductor, increasing the conductor size, and which means that reducing the corona effect. Now another way is reducing the corona with the help of corona ring. Now here in figure we see the corona ring. The electric field is stronger where there is a sharp conductor curvature. Because of this, corona discharge occurs first at the sharp point, edges and corner. Now corona ring reduce the corona effect by rounding out the conductors and making them less sharp, and they are used at terminal of very high voltage equipment such as the bushing of high voltage transformer. The corona is electrically connected to the high voltage conductor and encircling the point where the corona effect is most likely to occur. This encircling significantly reduces the sharpness of the surface of the conductor and distributing the charge across the wider area, and this in turn reduces the corona discharge. So here we discuss about the advantages and disadvantages of corona.
and then we discuss about the how to reduce the corona. Now we discuss the corona losses. First of all, to find out the formula regarding the corona losses, we have to introduce like critical distributive voltage. So what is critical voltage? A critical voltage or a distributive critical voltage means the potential difference between the conductor at which electric field intensity at the surface of conductor exceeds the critical value and corona is generated, which is known as distributive critical voltage. यहाँ पर जो क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज है उसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है अगर क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज से बढ़ जाएगी तो कोरोना इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और वो जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी, हमारा जो साउंड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी और जो वहाँ पर जो है वो हमें आर्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो है वो हमें विजुअली हम देख नहीं पाएंगे। तो अगर हमें विजुअली जो है कोरोना इफेक्ट देखने को मिले, यानी कि जो इफेक्ट है कोरोना की, उस इफेक्ट के अंदर जो आयोनाइजेशन ऑफ एयर है उसके कारण हमें जो है विजुअली कोरोना वायलेट ग्लो में दिखने को मिल जाए, तो वो हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होगा। यानी उस वोल्टेज के ऊपर हमें विजुअली कोरोना दिखने को मिलेगा। So now here we discuss about the two equation regarding critical distributive voltage and visual critical voltage. क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई √2 इंटू R इंटू डेल्टा इंटू M0 ln dq बाई R वोल्ट। तो यहाँ पर जो R है वो हमारी रेडियस है कंडक्टर की, जो भी हमारा कंडक्टर होगा उसकी रेडियस। D जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है और जो DEQ है वो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर है, यानी कि हमारा दो कंडक्टर होगा उसके बीच हमें कोरोना देखने को मिलेगा। तो ये कंडक्टर का जो रेडियस होगा वो हमारा R और उसके बीच का जो दो कंडक्टर के बीच का जो स्पेसिंग है वो हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस यानी कि DEQ जो है वो हमारा होगा। और यहाँ पर जो डेल्टा है वो हमारी डेंसिटी है, M0 जो है वो हमारा सरफेस फैक्टर है, जो सरफेस कितनी स्मूथ है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और डेंसिटी जो है वो हमारा जो भी हमारी एयर जो है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड रहेगा, यानी कि ये दोनों फैक्टर जो है वो हमारा वेदर कंडीशन और कंडक्टर की कंडीशन के ऊपर दोनों डिपेंडेंट होंगे। अगर वेदर कंडीशन जो है वो ख़राब होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। इसका मतलब कि जो VD की वैल्यू जो है वो हमें कम मिलेगी, यानी कि जो जिस वोल्टेज पर कोरोना इफेक्ट होगी, लॉसेस होगा, वो वोल्टेज जो है वो घट जाएगा। यानी अगर सपोज हम अज्यूम करें कि वो 80 वोल्ट पर जो है 80 किलो वोल्ट पर कोरोना दिखने को मिलता है हमें, वही कोरोना हमें 70 पर मिलने लगेगा। तो वो क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज फाइंड करने का ये फॉर्मूला है और ये जो है वो विजुअल क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास दोनों फॉर्मूला है। उससे हम क्या है हमारे एग्जाम्पल के अंदर दोनों फॉर्मूला जो है वो फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने दो कंडक्टर जो है और दो कंडक्टर के बीच में जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी उसके ऊपर से हमने ये दोनों फॉर्मूला जो है वो फाइंड किए हुए हैं। अब जो कोरोना लॉसेस जो है वो फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूला है वो देखेंगे। So now here we discuss about the formula regarding to find out the corona losses. So find out the corona losses. Here we have a peak formula. ये जो peak formula और पीटरसन फॉर्मूला दोनों हम देख रहे हैं वो दोनों अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट है उसने दिए हुए हैं और दोनों फॉर्मूला से जो है वो हम कोरोना लॉसेस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पीक फॉर्मूला जो है वो है 243.5 इंटू F + 25 बाई डेल्टा √R बाई D V माइनस VD होल रेस टू स्क्वायर 10⁵ इंटू किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। यहाँ पर R जो है वो हमारे कंडक्टर की रेडियस होगी, D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर होगा यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, और V जो है वो हमारा फेज वोल्टेज है
और VD जो है वो हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज है, और F जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, और डेल्टा हमारी डेंसिटी है। तो ये दोनों जो है इस फॉर्मूला से जो है वो हम हमारा कोरोना लॉसेस जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह पीटरसन फॉर्मूला है जो वो है 21 इंटू 10⁻⁻6 F इंटू वी स्क्वेयर अपॉन log 10 D/R होल रेज़ टू स्क्वायर इंटू F इंटू KW अपॉन KM पर फेज। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम जो है वो हमारे कोरोना लॉसेस जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो हम VD की वैल्यू लेते हैं, अगर स्टॉर्मी वेदर कंडीशन हो तो हम यहाँ पर 0.8 VD जो है VD की जगह पर 0.8 VD जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अब ये सभी फॉर्मूला जो है उसका हम यूज़ करके एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करेंगे कोरोना के रिलेटेड। तो अब कैसे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज 220 kV 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज इक्विवेलेंट स्पेसिंग between the conductor is 6 meter and the radius of the conductor wire is 11.1255 mm, and the additional data is given temperature which is 25 ounce Celsius and the rough surface M0 which is 0.84 and the pressure is 73 and the find critical distributive voltage VD। तो यहाँ पर हमें critical distributive voltage फाइंड करना है, और क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √2 इंटू P इंटू R इंटू डेल्टा मल्टीप्लाई विथ M0 ln D इक्विवेलेंट बाई R। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम हमारे क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जो R है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है, डेल्टा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो नहीं है हमारे पास। R की वैल्यू तो हमारे पास है, M0 जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, जो फैक्टर हमें दिया गया है रफ सरफेस फैक्टर, तो M0 की वैल्यू भी है हमारे पास। D इक्विवेलेंट यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर वो भी 6 मीटर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो R रेडियस है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब हमें VD फाइंड करने के लिए सिर्फ डेल्टा फाइंड करना होगा। डेल्टा मिल जाए तो हम VD की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब VD फाइंड करने के लिए पहले डेल्टा फाइंड करना होगा, और डेल्टा यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो है डेल्टा इज इक्वल टू 3.86 प्रेशर 273 प्लस टेम्परेचर थीटा। तो ये जो है 3.86 प्रेशर जो है वो दिया हुआ है वो है 73, नाउ 273 प्लस 25 थीटा टेम्परेचर की वैल्यू, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0.94। तो ये जो है वो हमें रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मिली है। अब VD की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन √2 इंटू R इंटू डेल्टा इंटू M0 ln D इक्विवेलेंट बाई R वोल्ट्स। तो 3 इंटू 10⁻⁶ बाई √2 इंटू R जो है वो 11.1255 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा जो है वो फाइंड किया 0.94 इंटू जो M0 है वो 0.84 इंटू ln D इक्विवेलेंट की वैल्यू वो है 6 अपॉन जो R है उसकी वैल्यू है 11.1255 इंटू 10⁻³ तो ये जो फॉर्मूला इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 118 किलोवोल्ट। तो ये हमें VD की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो इसी तरह के जो एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम के अंदर हमें पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोरोना लॉस फाइंड करने को कहा जाए, कोरोना लॉस फाइंड करने के लिए हमें यही सब वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, R डेल्टा M0 D इक्विवेलेंट और R, और उसके साथ साथ हमें VD की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो VD की वैल्यू अगर यहाँ पर मिल जाए और हमें जो है वो सप्लाई वोल्टेज हमारे पास हो तो हम कोरोना लॉसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
आइदर पीक फॉर्मूला से या फिर हमारा जो पीटरसन फॉर्मूला है, दोनों किसी का भी यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो है वो हमें एग्ज़ाम में बताया गया होगा कि किस फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है। तो इसी तरह के जो एग्ज़ाम्पल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पर सोल्व किए। उसी तरह के एग्ज़ाम्पल जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोरोना के अंदर इतना ही। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।